Hi, hello everyone. Hello. Hi, Akshara, Gayatri, Komal, Prerna. Hello, you guys. I am so sorry. I was supposed to do the live yesterday, but didn't happen. I'm so sorry. Apologies. But today we are here to together plan the month of April. आज क्या हो गया है 29th आई गेस. मैंने अपने कैलेंडर पे ऑलरेडी अप्रैल लगा लिया है बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्रैल. इफ़ आई बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, ये जो पूरा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 है, इट वाज लाइक अ जेन्युइन फ्लॉप फॉर मी. बहुत सारी चीज़ें हेवायर हुई और बहुत कुछ वियर्ड हुआ विच आई would not like to talk about, but the first quarter just wasn't the right start to the year. But I really hope कि आने वाले quarters अच्छे जाएं. मैं questions actually यहाँ से answer करती चलती हूँ because I think it will be easier for me to. वाह, मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है. कोई नहीं. Hi Anu. Hi Dhan. Sorry, I missed your name. Dhanishta, I guess it was. हेलो. वॉइस इज़ लो. अगर मैं ऐसे बात करूँगी तो फिर बहुत वियर्ड आवाज़ आएगी. लेकिन हाय एवरीवन. Alright, so let's start what we are actually here for. I already have my essentials with me, the year of becoming planner. I also have my feel your feelings journal. आजकल क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है to actually journal my emotions and feelings because I feel a lot and I have to put it down on paper so that I don't feel a lot. Like I feel a lot but then I'm able to process that feeling. I also have my notepad here. इसमें I'm going to do my monthly meal prep, and alongside I also have my little cute sticker book. I also have my highlighters here with me so that it's easier to do the creative bit. And I also I also have मेरा ये black board sort of. इस पे हम ऐसे April planning लिख लेते हैं. I think it will be fun. And then let's start. ये सिर्फ मुझे ही दिखेगा, मैं सिर्फ अपने लिए लिख रही हूँ. But ठीक है. I think the month of April for me is in the color blue. तो मैं blue color की chalk से लिखती हूँ. Let me just. I'm also vlogging this, by the way, which will be most likely up on the next Sunday. So I'm very excited for you to see that vlog also. It is. Should I give you a spoiler? It is a very interesting vlog. It is. नहीं, मैं नहीं देती spoiler. तुम लोग देखना. It will be very fun. तो हाँ, हम वो करने वाले हैं. मतलब वो कर रहे हैं the vlogging bit. And ये मैंने इस पे लिख लिया है अप्रैल प्लान. जब से ये मेरी लाइफ में आया है ब्लैक बोर्ड, इट्स जस्ट आई लव इट. आई लव बीइंग अ क्लासरूम किड अगेन एंड जस्ट राइटिंग विद चॉक ऑन स्लेट. खैर चलो, लेट्स गो. Let's start with our planning. I have all of my stationery. If you don't have, you should get it for yourself. And I would highly recommend कि अगर plan करने मेरे साथ बैठ रहे हो तो also have the calendar in front of you. Though हम लोग के planner में भी calendar है, but back and forth करने से अच्छा है कि अगर सामने हो तो मतलब it is better. If you don't want then it's okay. ठीक है. तो इफ़ यू आर यूजिंग द ईयर ऑफ बिकमिंग प्लानर, हमारे वाले प्लानर में देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग कॉल्ड क्वार्टरली रिफ्लेक्शंस विच इज़ बेसिकली दिस. एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है बिकॉज जेन्युइनली द फर्स्ट क्वार्टर वॉज वियर्ड to just say. I was so demotivated throughout and मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. मैंने बस I have just survived through it. If I
be very very honest. There were so many things that I had planned, but वो नहीं हो पाए. Please take my name, Sumedha. Hi. What are you doing nowadays? Okay, what am I doing nowadays? I am working on a couple of things which I cannot talk about itna detail mein, but we're coming up with something on Ikami also. I am working towards my content also. I am yet to finish my internship also, तो वो भी चल रहा है side by side. From the day after, I begin a very hectic block, which is obs and gynae. So I am very nervous for that too. This is my last block of internship, so I am also a little bit excited. बिकॉज जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो यार ये ख़त्म हो जाए कब ख़त्म होगी, बट देन व्हेन इट एक्चुअली नियर्स द एंडिंग यू आर लाइक यार ये ख़त्म हो गई. सो इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग. आई ऑल्सो हैव माई फेयरवेल कमिंग अप दिस मंथ इन द नेक्स्ट 2 weeks, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग, क्योंकि आप पूरे 5 साल इमेजिन कर रहे होते हो कि ये कॉलेज कब ख़त्म होगा एंड देन व्हेन इज़ फाइनली एंडिंग इट जस्ट फील्स वियर्ड, यू नो. So multiple things happening. Life is very weird right now. I think I'm at a very crucial stage of my life, if I have to just put it that way. बहुत कुछ transition हो रहा है and I'm not ready for change. But इतना कुछ change हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ. खैर बहुत बातें हो गई, अब हम start करते हैं. तो if you're with me, you can probably start from the monthly reflections also. और मैं थोड़ा क्वार्टरली पे आना चाहती हूँ, क्योंकि मार्च में इतना ऐसा कुछ मेरे साथ वो मतलब मेरे को रिफ़्लेक्ट करने को ज़्यादा है नहीं. मैं तीनों मंथ्स को क्लब करके ज़्यादा प्रेफर करूँगी. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग. इफ़ यू आर प्लानिंग विथ मी, डू यू वॉन्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ कामिंग सा म्यूज़िक? इफ़ आई शुड प्ले दैट, और आर यू ओके विथ द साइलेंस? क्योंकि आई एम श्योर थोड़ा सा तो बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा. मेरा पीछे एसी भी चल रहा है. ओके एक सेकेंड. आई गॉट अ Kusum is saying, I really like your content. Since 4 years I'm following you. It is so overwhelming to see you at this stage. Oh my god. No, don't feel overwhelmed. मुझे मेरे हिस्से का overwhelm होने दो. It's okay. We'll get there. Last month of NEET prep, any tip for NEET UG? Do not basically take up any new study material that you've never ever studied. Do not last 15 days में do not give tests. Just concentrate on figuring जो भी तुम्हें नहीं आता है उस पर concentrate ज़्यादा करना, and focus on revision as much as possible. Don't take up new things right now. This is not the time. हाँ चलो स्टार्ट करते हैं. म्यूज़िक के लिए एनी सजेशंस? एनीबडी सेइंग समथिंग? क्या था, एक सेकेंड. What things are needed now for monthly planning? Okay, I'll tell you what all do I have. I have my planner, ठीक है. If you have your planner, good. If you don't have, take a notebook. I also have a notepad अलग से, because मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग भी करनी है जो इस प्लानर में इंक्लूडेड नहीं है. I also have my journal, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये प्लान करते करते मैं थोड़ी ओवरवेल्म हो जाऊँगी सब कुछ लिखते लिखते जो भी हो रहा है. तो इसलिए मेरे पास मेरी जर्नल है टू बेसिकली जर्नल. मेरे पास मेरी प्लेन जर्नल भी रखी हुई है, जस्ट इन केस आई गेट सम न्यू आइडियाज़ और आई वांट टू डंप समथिंग, आई विल यूज़ दिस. ठीक है, दिस हैज़ द बुक मार्क. ठीक है, एंड आई ऑल्सो हैव माई स्टिकर बुक रेडी हियर with like cute stickers. I also have highlighters. पेन में मेरे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है. I only have one pen. तो I have a few colors to colorful pens हैं मेरे पास actually. Purple, red I have. तो if you have even you can experiment थोड़ा बहुत here and there. And yeah, that is about it. And I also have my calendar. Calendar is optional but it is good to have always, क्योंकि जब हम मंथ का प्लानिंग कर रहे हैं we need to know
कि मंथ में क्या क्या हो रहा है, कब कब हमारी छुट्टी है एंड ऑल ऑफ दैट. सो या दैट्स दैट. शुरू कर सकते हैं अब हम. म्यूज़िक के लिए मुझे ज़्यादा रिप्लाइज तो नहीं आया. अच्छा, लो फाई समबडी सेइंग music. Okay, people are saying music. Okay, I'll get the laptop then. Just give me a minute. Alright, I am back. Let me play lo-fi music. थोड़ा सा एड्स आ सकते हैं, उसको प्लीज़ इग्नोर करना. आई डोंट हैव यूट्यूब प्रीमियम. आई लव दिस चैनल, यही चलाते हैं. ऐड आ गया है पहले ही. आई कीप माई माइक थोड़ा इसके पास. ओह, जगह ही नहीं है. ठीक है. आई होप यू विल बी एबल टू हियर द म्यूज़िक फ्रॉम नाउ ऑन. मैं इसको उसके पास रख रही हूँ. Is the music okay? Please let me know. I am starting with my quarterly reflections. You can start with whatever. पहले basically it is about reflecting on our previous months. पूरा quarter ही है अब मेरे सामने, तो मैं exactly quarter ही reflect कर रही हूँ with my becoming planner. Alright, so if you're looking for थोड़े से prompts to actually help you plan, you can maybe write about what worked for you this month, what did not work for you this month, what were some mistakes you made, and what could you redo. ठीक है. If you're looking to summarize the entire quarter, I would suggest write about the highlight. What are you exactly grateful for, and what is one or maybe a few challenges that you got through.
ठीक है, आई थिंक दैट विल हेल्प। नाउ मैंने अपना वो वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई एम ऑन दिस सेक्शन नाउ। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर एबल टू सी, क्योंकि वीडियो मिरर्ड होता है। इट इज़ बेसिकली अबाउट योर गोल्स एंड प्रोग्रेस चेक। ये तो मैं कम्प्लीटली स्किप करना चाहूँगी, बिकॉज इफ़ आई गो बैक, एंड आई एम नॉट किडिंग, इफ़ आई गो बैक टू जैन एंड आई जस्ट सॉर्ट ऑफ रीफोकस ऑन माई गोल्स, या जो मैंने ईयर के स्टार्ट में लिखे थे ना गोल्स, उनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो इसको स्किप नहीं करते हैं, लिख लेते हैं वट एवर वॉज डन नॉट डन, तो थोड़ा हमें आइडिया मिल जाएगा।
I'm switching to my journal as of now, to the Feel Your Feelings journal, because there is, I think, stuff that I want to first write about and then go back to my plans. So let's come back here, and I'm actually going to do this. This here is the fear jar, so you drop all your fears here, because I think there are a lot of what ifs in life currently. So I just want to write all of them down, just throw them in the universe, to just leave all those what ifs and just focus on what can I do. That's what we're doing.
Alright, so I just finished this journal wala kaam. Um, ek to I did the fear jar, of course, and one thing that I really love about the journal is how it immediately gives me perspective. So अभी जो मैंने क्वेरी आंसर की ना द जर्नल प्रॉम्प्ट दैट इज़ व्हाट 3 AM fear do you rarely discuss in daylight. ठीक है, आई एम ऑल्सो राइटिंग आज का डेट ताकि मुझे याद रहे. 29th March 2026. हाँ, तो I answer this and then the second prompt, which is common for all pages and it will always be sorry, that if I were to advise someone feeling the same feeling that I'm feeling, what would I say? And I think this immediately gives you so much perspective immediately, because now when you think about कि अच्छा अगर मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई लव्ड वन सेम चीज़ सोच रहा है अपने बारे में, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ और मैं नहीं कर पाऊँगी, यू विल इमीडिएटली टेल देम कि अरे पागल है क्या, you're just stuck. Just come out of your thoughts. And I've written this down in my journal that problems in your head are way bigger than problems in real life. They are extremely small, but we in our heads make them so huge कि अगर ये नहीं हुआ तो life over, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, what will people think about me, etc, etc, which is not true. It's just your mind convincing you otherwise. Convince your mind otherwise that no, nobody, I am way bigger than just one goal. I am way bigger than a few numbers. I'm way bigger than just how one thing turns out for me. I am a complete whole human being and I have so much in my life to do. Yeah, just that. Alright, now I'm coming back to my journal. The next question that we have, The next question that I have in my planner is which of my goals brought me fulfillment and which of my goals felt forced. So I'm going to answer these now because I think this would give a little more clarity on how do I want my next quarter to look like. Yeah.
All right, now I am on to the next section, and this one in my planner says lessons and realizations and reset and realign. So it has multiple small prompts to basically write down like one habit I'll continue, one new thing I'll try, what do I want to do differently in the next quarter, what mindset I'm leaving behind, and all of that. So yeah, I'm just quickly going to finish this off and then we'll be finally on to April. You follow every AI update. You've tried every model. But can you actually automate your work with it? I'm not going to teach you how AI works. I'm going to hand you.
Alright, now we are finally at April. Let me show you the artwork. It's very, very pretty. It's basically a girl giving water to her plants because April is all about becoming consistent, and I think this is so for me. मेरे को अप्रैल का पोस्टर नहीं मिल रहा है अभी, but I would have shown you that also. बट या बाय द वे हमने अपने 12 पोस्टर्स भी अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दिए हैं, सो इन केस यू वांट टू लाइक डेकोरेट योर ओन स्पेस विद इट यू कैन. So the April quote actually says small steps create lasting changes, and in the calendar we have little steps repeated quietly change everything. So that's what we are hoping to do with the month of April, that we will change things slowly, gradually, work towards our goals slowly, gradually. Um, Do you consider the upcoming months weather in planning of traveling and other works? Oh yes, definitely. I do consider that. For example, in my content, you will see more of summer. In general, like my life, like my meal prep will have more of summer appropriate recipes and everything. So yeah. What lights do I use? This is completely natural light. मैं एकदम अपनी balcony के side में बैठी हूँ. यहाँ पे मेरी balcony का door है. It's completely glass. So yeah. How do you do so much planning? I do so much planning, which is why I'm able to do so much. जितना भी थोड़ा बहुत अभी हो रहा है मुझसे. That's what. Usually we try to achieve, एक second, we try to achieve, sorry, so many things in a single month. How do you figure out what exactly to do? So one area of life is major focus every month for me. For example, this month is just health. मतलब basically the goal is to eat clean, to work out every day. Rest everything will fall into place according to me. At least for this month I want to do this, because I think workout also makes you fit physically. At the same time, it also has an impact on your brain. So when your mind is calm, which is something that I really need right now, honestly, so your needs can be very different from mine abhi ke liye. So because I need more calm, that's my goal. I'm not for this month and probably the month of May not very key work, because I know that I already have a hectic block of internship. तो उसी में मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा. तो उसके अलावा मैं कंटेंट पूरा टाइम नहीं चिल्लाना चाहती हूँ, बिकॉज उससे फिर आई विल गेट बर्नट आउट, जो मैं ये पिछले 3 महीने बहुत ज़्यादा रही हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए आई वॉन्ट टू टेक इट अ लिटिल ईजियर ऑन माई सेल्फ एंड जस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट really matter, like my health, like my physical health and my mental health. So those will be the 2 priorities. The priorities also are to journal every day, to basically write down 3 pages every day without fail. That's majorly the goal for this month. Can you rate yourself on aligning with your plans? Oh, it depends month to month, but on average, I think I'll give myself an 8 on 10. I am more or less pretty aligned. कुछ महीने थोड़े ख़राब हो जाते हैं, जैसे पिछले कुछ महीने गए, but otherwise I'm pretty aligned, which is why I really want to very with detail plan this month of mine so that it goes according to my plans. Chalo, now we are on the monthly dashboard and the weekly overview. Weekly overview मैं हमेशा बाद में भरती हूँ, तो वो मैं अभी नहीं भरूँगी. Probably week 1 मैं अभी भर लूँगी, yes, but week 2, week 3 as the weeks come in we'll write, and then I'm going to come to this section which is the calendar. यहाँ पे I'm going to write down
my content plan majorly for this month, and then we'll move on to meal planning, which will happen here. Let's go. If you are a woman who enjoys listening, guiding, and supporting others, there is a strong chance you.
Please excuse me for this, but if you have a brand of stationery, you'll have to excuse me. Matlab, because I have a brand of stationery, you'll have to excuse me for having 3 journals for 3 different things. एक में मैं अपना कंटेंट लिखती हूँ, एक में मैं अपने रैंडम आइडियाज़ लिखती हूँ. तो मैं भी इसको इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे मेरे आइडियाज़ देखने थे. So what I'm doing essentially here is it's very easy and very like useful according to me. मैं क्या करती हूँ to plan my content I use the grid. This is the entire grid है ना. तो every Sunday I'm going to note down क्या क्या long form जाना है because you know my long forms come every Sunday. Now that I have a plan of the entire month which I do, तो जो 5th को व्लॉग जाने वाला है वो मैं ऑलरेडी फिल्म कर रही हूँ. एक और व्लॉग है जो प्रॉबली 19th को जाएगा, वो मैंने फिल्म कर लिया है. जो 12th को जाएगा वो मैं प्रॉबली ट्यूसडे से फिल्म करना स्टार्ट कर दूँगी. तो आई विल हैव एवरी थिंग डन बाय द मिड ऑफ द मंथ. तो एक तो वो बेनिफिट हो जाता है. देन बाकी की ग्रिड में आई एम गोइंग टू राइट व्हाट आर द यूट्यूब शॉर्ट्स दैट आर गोइंग टू गो. एंड जो साइड में गोल्स वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे आई एम राइटिंग माई रैंडम आइडियाज़ का डंप फॉर माई इंस्टाग्राम. ठीक है. नाउ यू कैन डू दिस फॉर एनी थिंग. बेसिकली इफ़ यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड यू हैव मीटिंग्स कुछ कुछ चीज़ों की, और देर आर सर्टन टास्क जिनके कुछ कुछ डेडलाइंस हैं, वो आप वहाँ नोट डाउन कर सकते हो. इफ़ यू हैव एग्जाम्स लेट्स से, यू कैन नोट डाउन क्या क्या चीज़ का कौन कौन सा एग्ज़ाम है. रेस्ट ऑफ द डेज़ में व्हाट ऑल डू यू हैव टू प्रिपेयर, क्या क्या चैप्टर्स यू वांट टू डू on what days. So I think this gives you daily wise clarity very much. मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि once I have it all written, I know इस दिन ये जाना है, उस दिन वो जाना है. तो I can actually schedule my content way prior. मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से ही मैं schedule कर सकती हूँ, which is why I do this kind of planning. बेसिकली अभी आई एम चेकिंग इन माई फ़ोन कि मेरे पास क्या क्या फिल्म्ड ऑलरेडी है जो बस एडिट होना बाकी है, एंड विच द थिंग्स दैट आई कैन एक्चुअली पोस्ट. तो वो मैं देख रही हूँ, एंड देन वील जस्ट गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द स्टफ.
हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अगर नहीं कोई आर्थिक मदद नहीं हो तो उससे बहुत कठिनाई होती है। तो हॉस्टल चलाने
Okay, I'm done with the most time taking thing of the entire month. अब ये मत समझना कि ये सारी पूरी प्लानिंग ऑफ द मंथली कंटेंट मैंने अभी करी है. मैं बीच बीच में बैठ के आइडिया डंप बनाती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, जो भी मुझे लगता है मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, और फिर उसके बाद उसको एक कंसोलिडेशन में मंथ के स्टार्ट पे लिखती हूँ. तो या दैट्स दैट. नाउ वी आर ऑन टू आवर ट्रैकर्स. मील प्लानिंग अभी मेरी रहती है. तो ट्रैकर्स में अभी मैं बस ये मेंशन करने वाली हूँ कि क्या क्या मुझे एक्चुअली हैबिट्स हैं जो ट्रैक करनी है. बाकी मैं और कुछ ज़्यादा ट्रैक अभी कर नहीं सकती. मूड एंड पीरियड तो तभी होगा व्हेन द मंथ स्टार्ट्स. तो बस मैं हैबिट्स मेंशन कर रही हूँ. मेजरली आई कैन डिस्कस दिस कि मेरी क्या क्या हैबिट्स आई वांट टू डू दिस मंथ. सबसे पहले है जर्नलिंग, विच इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू एवरी डे विदाउट फेल. या तो सुबह या रात, डिपेंडिंग ऑन मुझे कितना टाइम मिलता है. द गोल इज़ टू डू इट एवरी डे सुबह ओनली, बट मुझे पता है प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाएगा. तो सुबह या रात. देन वर्कआउट ऑल्सो हैज़ टू बी डन एवरी डे. जिन दिनों मैं वर्कआउट करने की कंडीशन में नहीं हूँ, उसमें एटलीस्ट आई जस्ट मूव माई बॉडी, आई जस्ट डांस फॉर अ वाइल और डू समथिंग दैट जस्ट ब्रिंग्स माई एंडोफिन्स टू लाइफ, वैसे वाला. तो जर्नलिंग हो गया, वर्कआउट हो गया. व्हाट एल्स डू आई वांट टू डू? आई वॉन्ट टू हैव वन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे, और वो टास्क हम पूरे दिन, मतलब पूरे दिन का गोल ये है टू गेट जस्ट दैट वन टास्क डन. सो वन टास्क एवरी डे, वन बिग टास्क. नाउ वी आर ऑन टू दिस सेक्शन जहाँ पे आप या तो नोट्स ले सकते हो, और एक हमारा गेम है जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस मंथ में ही खेलूँ. सो यहाँ पे हमें करना क्या है, यू हैव टू पिक एनी 3 हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रेचिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ. दिस इज़ सो कूल एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ. ट्रैक देम डेली विद स्टिकर्स, डूडल्स और स्टैम्प. तो ये आपका एक कस्टम हैबिट ट्रैकर आप यहाँ पे बना सकते हो. साथ में वी ऑल्सो हैव दिस स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट विच आई हाईली सजेस्ट कि आप चेकआउट करो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट बिकॉज हमारी सारी प्लेलिस्ट आर वेरी फन. अब मेरी इधर वाली प्लानिंग हो चुकी है. आई एम नाउ ऑन टू मील प्लानिंग, जिसके लिए मील प्लानिंग के लिए सॉरी स्टिकर्स क्यों आ गए. मील प्लानिंग के लिए मैं थोड़ी सी चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाली हूँ. एंड बाय द वे मेरी डेली प्लानिंग के लिए आई ऑल्सो यूज़ माई स्टिकर बुक. मेरी स्टिकर बुक कह रही हूँ, टू डू लिस्ट, जो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि ख़त्म ही होने को आ गई है. ये वाली तो नई निकालनी पड़ेगी मुझे, इतनी तो ये ख़त्म हो चुकी है, बहुत थोड़ी सी बची है. तो हाँ, आई एम ऑन टू माई मील प्लानिंग. मील प्लानिंग में मैं थोड़ी सी हेल्प चैट जीपीटी की भी लूँगी, क्योंकि आई एम नॉट दैट ग्रेट एट इट. माई फिटनेस ट्रेनर इज़ ऑल्सो गिवन मी थोड़ा सा एक मील प्रेप प्लान सॉर्ट ऑफ, लेकिन मुझे हेल्प लेनी है इन द सेंस दैट आई नो कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या मील प्रेप करके रखना है, एंड वैरायटी में बेसिकली. आई होप यू गेट दैट. तो मैं अभी के लिए सिर्फ हफ्ते का मील प्रेप कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी खाने से बोर हो जाती हूँ, एंड मैं ना सेम खाना नहीं खा पाती. तो आई विल सी एक हफ़्ता प्लान करके कि मुझे क्या क्या अच्छा लग रहा है और क्या क्या ख़राब लग रहा है. जो ख़राब लग रहा है उसे हम कम्प्लीटली इजेक्ट आउट कर देंगे बेसिकली. दैट्स द प्लान. लेट्स गो.
सो वाइल मील प्रेपिंग इज़ समथिंग जो मैंने अभी काफ़ी रिसेंटली स्टार्ट किया है, एंड ऑल्सो बिकॉज नाउ दैट आई हैव शिफ्टेड एंड आई कैन एक्चुअली कुक थिंग्स एंड गेट थिंग्स कुकड, तो इट रियली हेल्प्स, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम बस वीकली ग्रोसरीज इकट्ठी करने में एंड रोज़ रोज़ बस ये डिसाइड करने में आज क्या बनेगा निकल जाता है. तो विच इज़ वाई वी आर डूइंग दिस.
ऑलराइट, तो मैंने इस हफ्ते का स्टार्टिंग टुमारो का मील प्रेप कर लिया है, बिकॉज़ अप्रैल का फर्स्ट वीक हमारा यही होने वाला है, स्टार्टिंग टुमारो 30th ऑफ March. So yeah, this was majorly about my monthly planning. I hope you enjoyed planning with me. I hope this was something that also gave you a few insights, and I will love to do this probably like a monthly thing. If you guys really want it, let me know in the comments, or however. And I'd love to like sort of make this a series, because I think it just brings more accountability in me also, and probably it'll help you also. So that is pretty much about this planning session. I hope you had fun, and I hope your planning also happened for this month. And yeah, दैट इज़ मी टेकिंग अ लीव, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी सारा और भी काम निपटाना है, एंड इट्स ऑलरेडी 80 मिनट्स टू दिस लाइव सेशन. बहुत ज़्यादा टाइम मैंने प्लानिंग में लगा दिया है. तो नाउ आई शैल सी यू probably like tomorrow only in a short, on the next Sunday in a long form. And live का मुझे बताना, अगर इसको मंथली कन्वर्ट करना है तो हम देखते हैं. That's it.